Good morning, my dear students. I am Sushil Kumar Singh, PGT Chemistry. Today I am going to teach the chemical property of nitrogen. So I think in yesterday lecture I had discussed the what is the oxidation state. So I think already I have told all these things. Element of this group can exhibit a maximum oxidation number 5. I think already I have discussed all these things what I'm showing here. And the last yesterday I think I was discuss the oxidation number of nitrogen. And what I discussed, I think I had discussed the nitrogens besides -3 oxidation state. Nitrogen besides -3 oxidation state, it can also exhibit +3, +5 and so many oxidation states. Like that, if I talk about the nitrogen, lithium nitride, calcium nitride and ammonium nitride, in these elements nitrogens are present in a -3 oxidation states. And if I talk about the hydrogen, -2 oxidation state, hydroxylamine -1, nitrogen 0, N2O +1, HNO3 +5, NO +2, N2O3 +3, NO2 +4, like that. In the similar fashion, if I talk about the oxidation state of phosphorus, then phosphorus exists in nature as a P4, PS3, PCl3, PCl5, and in it P4 have a 0 oxidation number, PS3, this is called our phosphine, -3 oxidation state. This is a phosphorus trichloride, +3 oxidation state, PCl5 +5 oxidation state. So the maximum covalency of nitrogen is a 4. The maximum covalency of nitrogen is 4, since it does not possess the d orbital in a valence shell. What I'm saying here, if you see, then the phosphorus have maximum oxidation number is +5. But if I talk about the case of nitrogen, then the electronic configuration of nitrogen is 1s2, 2s2, 2p3. So here d orbital are not present. Here d orbital are not present. So due to the absence of d orbital, this nitrogens can form maximum 4 covalent bond. How it is possible? If I talk about this is the case of S subshell, and like that P 1 2 3. So maximum it can forms a 3 bond. By S and 3P. So the maximum covalency of nitrogen is 4, since it does not possess a d orbital in a cell. Another, if I talk about the nitrogens, so nitrogen exists in a nature in the form of dinitrogen. Nitrogen will exist in the form of dinitrogen, and I have told that this nitrogens have a 1 sigma and 2 pi bond, 1 sigma and 2 pi bond, and this nitrogens are chemically inert due to the stronger bond length. So how you obtain the nitrogens? The first method of obtaining the nitrogens from the atmosphere, because already all of us are know that the atmospheric air have a good percentage of nitrogen. So how you obtain the nitrogen from the atmospheric? This one is done by liquefations and fractional distillation. So that things I'm writing here, commercially it is produced by liquefaction and fractional distillation of here liquid nitrogen. The boiling point of liquid nitrogen is 77.2 Kelvin. And another one, if I talk about the oxygens, the boiling point of oxygen is 90 Kelvin. So if you are going to do the fractional distillation, so before fractionally distillate to the oxygen, nitrogen will be distilled out. And if I talk about the laboratory, these reactions are very important in the laboratory. It is prepared by treating aqueous ammonium chlorides NH4Cl with sodium nitrites NH4Cl plus NaNO2. This reaction is very important. Here it forms a nitrogen
twice H2O plus NaCl. And this is also very important reaction. It is also a very important reaction. Here nitrogen can also be obtained by the thermal decompositions of ammonium dichromate and ammonium nitrate. These reactions are also very important. Nitrogen can also be obtained by first method in the laboratory. If I talk about the laboratory, ammonium chloride reacts with the sodium nitrites, form a nitrogen. And another one is, if you directly heat the ammonium nitrite and ammonium dichromate, then you got a nitrogen. Here this is ammonium nitrites. If you heat that one, and directly you got the nitrogen. In the similar fashion, if you heat the ammonium dichromate, this is ammonium dichromate, you directly got a nitrogen. And it's also a very important reaction. It is also a very important reaction which is asked in the board as well in the competition. Very pure nitrogen can be obtained in a small amount by the thermal decomposition of sodium and barium azide. Is very important. So what is the azide? This N3 contains if -1 oxidation number. This is the azide ion. So here I am talking about sodium or barium azide. Sodium or barium azide. So this is the barium azide. If you heat it, this barium azide, you got a nitrogen, but the nitrogen whatever you got it here, it will be in a very pure form. It will be here a very pure form. So okay, next more thing, it is a colorless, tasteless, odorless and non-toxic gas because of high bond. It is a chemically inert. Because of high bonds, the chemically inert. I think already I have discussed that once. Next point, at a very high temperature, this nitrogen sets a very high temperatures, reacts with oxygen to form nitric oxides. Already I have know that the nitrogens are chemically inert, but if you heat the nitrogen with oxygen at a very high temperature, then it forms a nitric oxides. And also it reacts with metals to form a metal nitride. For example, here if I talk about the lithium, reacts with the nitrogens, form lithium nitride. Again, if I talk about magnesium, reacts with the nitrogens, form magnesium nitride. So there is a one question that is asked in a competitions. Nitrogens cannot be obtained by heating ammonium dichromate. Already I think all of us know. If we heat the ammonium dichromate, all of us got a nitrogen. Another one is ammonium chloride plus sodium nitrites. Another one is ammonium chloride plus, I think ammonium chloride plus here ammonium chloride plus calcium oxide, and this is the barium azide. So the correct answer is here, this one. Because I think all of us know, if we heat the barium azides, we got say pure nitrogen. From here you got a nitrogen, for here you also got a nitrogen. One more question, structures and nature of tricylene nitrogen and trimethyl nitrogen, SiS3 3 and CH3NS. Planar basic, non-planar basic, non-planar acidic, means these options are given here. So what I'm saying here, that SiH3 forms a bonds with nitrogen, and here CH3 forms a bond with the nitrogen. So what I'm saying here, this carbons have a no d orbital. If I talk about this carbon, so this carbons have a no d orbital, means d orbital are not present in the case of carbon, but in the case of silicons, d orbital are present. So what's happen if I talk about SiH3? So this is the N here, SiH3 and SiH3 and SiS3, and this nitrogens have a one lone pair. And here if I talk about the silicons have a vacant d orbital. Silicons have a vacant d orbitals.
So it's a normal structure, sir. It is a normal structure of S3N. It's a normal structure. So what's happened? The normal structures of this one will be pyramidal. But what happened? This silicons have a d orbital. So this nitrogen, this is have a pyramidal. This have a pyramidal structures. It's have a pyramidal means non-planar structure. So what's happened in the case of silicon? This nitrogen gives its lone pair to the vacant orbital of silicon. So nitrogen gives his electron to the vacant orbital of silicon. Then what's happen now? This pyramidal structures will convert it to the planar, and now here दिस नाइट्रोजन द लोन पेयर ऑफ दिस नाइट्रोजन इज नॉट फ्री. मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब यह है कि सिलिकॉन में डी ऑर्बिटल होता है, तो डी ऑर्बिटल होने की वजह से क्या होता है, ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल को दे देगा. तो नाउ दिस पिरामिडल स्ट्रक्चर्स विल कन्वर्टेड इनटू द नाउ दिस पिरामिडल स्ट्रक्चर विल कन्वर्टेड इनटू द प्लेनर, एंड नाउ हियर द लोन pair of nitrogens are not free. So what happen? Basicity are decreases because the lone pair of nitrogen are not present here, so basicity are decreases. And one more thing, now this pyramidal structures will convert it into the planar structure. And if I talk about the CH3N, so what I'm saying that this carbon, ये जो कार्बन इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी ऐसे ही पड़ा रहेगा, नाइट्रोजन पे नोल पेयर भी ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल है नहीं, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा किसी. तो इसका जो हमारा स्ट्रक्चर होता है NCH3 का, इसका जो मेरा स्ट्रक्चर होगा नॉन प्लेनर, दैट इज अ पिरामिडल होगा, और इसकी जो बेसिसिटी होगी वो ज़्यादा होगी. आप ऑप्शन देखिएगा, पहला इन्होंने लिखा प्लेनर और बेसिक, ये इन्होंने स्ट्रक्चर लिखा SiH3N, और ये इन्होंने लिखा हुआ है CH3N. ठीक है, आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट इट. तो मैं इसकी बात करता हूँ, ये मेरा क्या होगा स्ट्रक्चर, अब ये प्लेनर होगा और वीक बेस होगा, प्लेनर और वीक बेस यहाँ भी दिया हुआ. तो दो ऑप्शन ये मेरे दो खत्म हो गए. अब इनकी हम बात करते हैं, तो ये मेरा क्या होगा, पहली चीज नॉन प्लेनर दोनों दिया हुआ है, बट इसके केस में इसका लोन पेयर पड़ा रहेगा, यानी कि फ्री है, इस वजह से क्या होगा, स्ट्रांग बेसिक होगा, तो स्ट्रांग बेस. सो द ऑप्शन इज D is correct. Same thing I'm writing in the case here, p pi d pi bonding. So the structures are planar and lone pair of nitrogen are used in a bonding, so it is a weak base. I think all of you got it. Still if any students have any problem, just discuss to me. So if I talk about the bond length and bond dissociation, these two are related to each other. Bond length, bond dissociation are related to the bond strength. It is related to the bond strength. If the bond strength is greater, then what happen? Bond strength is greater, then bond length will be less. And bond dissociation energy, I talk about bond dissociation energy will be greater. So similar, I think bond length, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, the size of the radius of Sb is greater than nitrogen. So what's happened? Bond length is here greater. So what happened in the case of bond dissociation? It will be heavy inverse relations to the bond length. I think all of you got it. And if I talk about the acidic strength, then if we move from nitrogens to bismuth, the acidic strength are decreases and basic strength are acidic strength are increases. Acidic strength are increases and basic strength are decreases. Why acidic strength are increases? Because the dissociations of hydrogen will be more easier. So the basic strength are decreases. And if I talk about the नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक मीन्स नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी के हाइड्राइड की हम बात करते हैं, तो नाइट्रोजन NH3 का मुझे पता है अमोनिया में बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बॉन्ड एंगल 107 होता है. बट मैं बात करूँ फास्फोरस SS3 और एंटीमनी हाइड्राइड की, तो कहते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें प्योर हाइब्रिडाइजेशन नहीं पाया जाता. व्हाट डू यू मीन बाय प्योर हाइब्रिडाइजेशन? व्हिच इज प्योर हाइब्रिडाइजेशन विल नॉट. प्योर हाइब्रिडाइजेशन ना पाए जाने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि क्या होता है, जो इसका s ऑर्बिटल है, सिंस द s ऑर्बिटल आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, सो द अट्रैक्शंस
increases, so the attraction increases, so do not give its lone pair, that's why the basic strength are decreases. इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाई प्योर ऑर्बिटल विल नॉट बी ओवरलैपिंग. एक्चुअली क्या होता है इसमें हम क्या कहते हैं, फास्फोरस एक पहली चीज़ से आपको याद रखना है, इसमें फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच की हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इन दोनों की एनर्जियों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है. और हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, करीब करीब हमारी जो हम कॉन्सेप्ट देते हैं कि द ऑर्बिटल विच आर गोइंग टू ओवरलैप हैव ए सिमिलर एनर्जी. और यहाँ हम क्या कहते हैं कि H2S का भी केस ऐसे ही, H2S की भी केस में सल्फर और हाइड्रोजन के बीच की एनर्जी का डिफरेंस, जो उनके ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी का डिफरेंस बड़ा ज़्यादा होता है. बट बेटर है आप इसे याद कर लीजिए, सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है. दूसरी चीज़ मैंने कहा था बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, डिक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. बेसिक स्ट्रेंथ और डिक्रीज है, तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज क्या कैसे होता है, जैसे मैं इनकी बात करता हूँ तो कहते हैं एस ऑर्बिटल आर मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, सो द अट्रैक्शंस, उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, सो डू नॉट गिव इट्स लोन पेयर. या बेटर है आप इसे भी याद कर लो, इस चीज़ को इसमें याद कर लेना, एसिडिक स्ट्रेंथ आर इंक्रीजेस व्हाइल द बेसिक स्ट्रेंथ आर डिक्रीजेस. और ये एक चीज़ आपको याद रखनी है. नेक्स्ट मेरा सिस्टम है रिड्यूसिंग पावर. रिड्यूसिंग पावर का मतलब है जो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक बेंजीमीन में बिस्मथ की बात करें, कितना जल्दी इसमें से ये BH जो है टूट के निकल जाए. जितना बढ़िया यहाँ से हाइड्रोजन टूट के निकल जाएगा, है कि नहीं, हम क्या कहेंगे उतना ही बढ़िया रिड्यूसिंग पावर है. तो रिड्यूसिंग पावर चूँकि बिस्मथ का रेडियस सबसे ज़्यादा है तो हाइड्रोजन को टूटना, या आप इसे आप रिलेट कर सकते हो, इसे आप और अच्छी तरीके से रिलेट कर सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से या बॉन्ड स्ट्रेंथ से. इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है, तो सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है तो क्या होगा, इसका हाइड्रोजन ज़्यादा इजीली निकलेगा, तो इसका हाइड्रोजन ज़्यादा इजीली निकलेगा तो इसमें क्या होने वाला है, इसकी रिड्यूसिंग पावर इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी. सेम सिस्टम रिड्यूसिंग पावर आर डिक्रीजेस. रिड्यूसिंग पावर आर. होप दैट ऑल ऑफ यू आर एंजॉय दिस लेक्चर. Later I will discuss the compounds of nitrogen. Thank you.